So we were रीडिंग ट्रैकोमा इंटेंस जो कि सीवियर डिसीज होता है विच नीड्स अर्जेंट ट्रीटमेंट. सो ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन इंटेंस, द फॉलिकल्स आर एंड पैपिले, जो फॉलिकल और पैपिले होता है आर सो न्यूमरस and inflamed that more than 50% of the palpebral conjunctiva, जो नीचे होता है जो दिखता नहीं है, blood conjunctival blood vessels cannot be seen clearly. This stage indicates a severe infection with high risk of serious complication. Now we have trachomatis scarring, TS. हमारा फिस्टो था ना, फिस्ट की तरह फिस्टो, ट्रैकोमैटस स्कारिंग. ठीक है. सो इसमें ओल्ड नाउ इनएक्टिव इन्फेक्शन, ओल्ड और इनएक्टिव इन्फेक्शन इसके अंदर आता है. सो क्या क्या आता है इसमें? ट्रैकोमैटस स्कारिंग, टार्सल कंजक्टिवल सिकटराइजेशन विथ वाइट फाइब्रस बैंड. ठीक है. वाइट फाइब्रस बैंड होता है. स्कारिंग हो चुका है. सिकटराइजेशन मतलब हीलिंग हो रहा है. हीलिंग स्कारिंग से होता है. वाइट फाइब्रस बैंड बन गया. इसलिए इसका नाम एस से स्कारिंग है. फिस्टो का एस इज स्कारिंग. ठीक है. देन वी हैव ट्राइकोमैटस trichiasis, needs corrective surgery. So presence of at least one trichiatic eyelash. ट्राइकियासिस है, एक ट्राइकियाटिक आईलैश प्रेजेंट रहता है. Then we have trachomatous opacities. Corneal opacities from previous trachoma cause visual loss. Presence of corneal opacity covering part of the pupillary region. सो ट्रीटमेंट क्या है? इसमें ओपेसिटी आ गया है. ठीक है. WHO has recommended a combination of interventions to treat trachoma and limit its blinding consequences known by the acronym SAFE. So treatment में ना safe strategy लिखना पहले. Surgery for cicatrial entropion and trichiasis. हेलो मोहम्मद मैक काउर. अभी हम लोग ट्रैकोमा पढ़ रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी का. सो ट्रैकोमा का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसको सेफ क्या कहा जाता है? सेफ क्यों? एस फॉर सर्जरी फॉर सिकेटराइजेशन एट्रोपियन एंड ट्राइकियासिस. सो बेसिकली दिस इज सिकेटराइजेशन मतलब हीलिंग होता है.
एट्रोपियन मतलब अंदर जो आई लैशेस घुस गया उसको, एंड ट्राइकियासिस के लिए सर्जरी पहले करेंगे. ए फॉर एंटीबायोटिक्स टू एलिमिनेट द ऑर्गेनिज्म. F for facial cleanliness to avoid infection, and E for environmental improvement with better hygiene and sanitation. So, antibiotic used to eradicate the organism are administered as topical medication. Tetracycline 1% eye ointment 3 times. Tetracycline देते हैं, ठीक है. ट्राइकियासिस टी से होता है, टेट्रासाइक्लिन भी 3 से होता है. So we give tetracycline ointment 3 times a day for a month, or azithromycin 1% eye drop 4 times a day for 2 weeks. Systemic medication, a single oral dose of azithromycin 1 gram is effective. ग्रान्युलोमैटस कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? So any unilateral conjunctivitis with localized conjunctival inflammatory granuloma is termed as granulomatous. मतलब केवल एक आँख में अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है विथ लोकलाइज्ड इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलोमा फॉर्म हो गया है, तो उसको ग्रैन्युलोमेटस कंजक्टिवाइटिस कहते हैं. इट इज़ एसोसिएटेड विथ रीजनल lymphadenopathy. Regional lymphadenopathy होगा. It forms part of spectrum of disease known as perinode oculoglandular syndrome. The basic etiopathogenesis of this form of conjunctivitis is usually the chance occurrence of some microorganism which usually causes systemic disease gaining entry into the body via the conjunctival route. It is rare, but the cause are worth mentioning, and briefly because it is important to recognize this rare manifestation of some common disease. See guys, तो आगे बढ़ते हैं. Right. So let's study ahead. So the basic etiopathogenesis of this form of conjunctivitis is usually the chance occurrence of some microorganism, which usually causes systemic disease. uh, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिस्टमिक डिजीज कॉज करता है और फिर वो बॉडी में गेन कर लेता है कंजक्टाइवल रूट के थ्रू एंट्री. रेयर होता है पर वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि रेयर मैनिफेस्टेशन को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है. पहला क्या है? पेरिनाउड ऑक्यूलोग्लैन्युलर सिंड्रोम. ठीक है. सो द टर्म वॉज यूज टू डिस्क्राइब यूनिलैटरल कंजक्टिवाइटिस. एक आँख में होता है. यूजुअली ऑफ द follicular type associated with the following: ipsilateral, preauricular or submandibular lymphadenopathy. मतलब सेम साइड में लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगा. प्रीऑरिकुलर फीवर होगा. इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन कॉज बाय नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन माइया हेंसिलिया, cat scratch disease, tularemia, tuberculosis, and mycobacterium infection, mumps, infection of mononucleosis, fungal infection, lymphogranuloma venerum, syphilis. Non-infectious causes include sarcoidosis, lymphoma, and leukemia.
Now, what are the symptoms? It includes redness, foreign body sensation, mucopurulent discharge. On examination, apart from follicular conjunctivitis, lymphadenopathy, there may be slight general malaise and fever with a skin rash. So investigation, it includes collection of conjunctival scraping for gram gypsum acid fast culture on bottle agar, sabostros saburod agar Lewinsky Jensen media complete blood cell count FTAABS ये सिफिलिस के लिए होता है चेस्ट रेडियोग्राफी मोनटॉक्स टेस्ट serological test for tularemia and cat scratch disease. So इसका treatment क्या होता है? So basically it includes warm compression locally on the region of tender lymph node, analgesics and antipyretics as required, and specific therapy for the underlying infection. A patient should be followed weekly till resolution of the symptoms. Conjunctival granulomas and enlarged lymph node may take 4 to 6 weeks to resolve. Now, cat scratch disease क्या होता है? वही हो जाएगा ना, कैट स्क्रैच डिजीज का ही नाम का ऑर्गेनिज्म होता है रोचेलेमिया हेंसेले. etiology क्या होता है? दिस इज कॉज्ड बाय रोचेलेमिया हेंसिले. cat scratch disease जो there is usually a history of being licked या फिर scratched by a cat 2 weeks or less before the onset of the symptom. Investigation क्या होता है? The diagnosis is made by serological test and Hanger Rose cat scratch test. Management क्या है? The treatment is supportive as the disease spontaneously resolved in 4 to 6 weeks. The organism is susceptible to tetracycline, trimethoprim, sulfamethoxazole, ciprofloxacin, which can be prescribed orally in the usual doses for 4 weeks, along with tropical gentamicin drops 4 times a day, and bacitracin B eye ointment 4 times a day for 4 weeks. There is no need to isolate the cat. Okay. Then we have lymphogranuloma venerum. सो बेसिकली ये ग्रैनुलोमैटस कंजक्टिवाइटिस के अंदर जितना भी ग्रैनुलोमा कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म सब है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं. पहला था कैट स्क्रैच डिजीज़, दूसरा है लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम. इसका कॉजेटिव एजेंट होता है क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, सीरोवॉर L1 L2 L3. कंटाजियस वेनेरल डिजीज़ मतलब समझ में आ रहा है? STD है, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, पर ये ABC नहीं है. दिस इज L1 L2 L3. क्लिनिकल फीचर क्या है? मैनिफेस्ट्स बाय एन इनिशियल वेसिकल. एक वेसिकल होता है जो बर्स्ट करता है, लीविंग अ ग्रेइश अल्सर फॉलोड बाय फ्रीक्वेंटली सुपुरेटिव रीजनल लिम्फेडेमा. सो गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो आगे फिर से पढ़ते. लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरम. सो लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरम किससे होता है? क्लोमाइडा ट्रैकोमैटिस, सीरोवॉर L1 L2 L3.
ग्रेइश अल्सर पहले वेसिकल होता है, बर्स्ट करता है, ग्रेइश अल्सर फॉर बनता है, फॉलोड बाय फ्रीक्वेंटली सुपुरेटिव रीजनल लिम्फ एडेनाइटिस हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? द आईलिड्स मे बी इन्फेक्टेड वेनरली और थ्रू एक्सीडेंटल कंटामिनेशन इन लेबोरेटरी वर्कर। सो एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन हो सकता है या वेनरली यानी एसटीआई से हो सकता है। मैनेजमेंट क्या? ट्रीटमेंट इज विथ एनी सिस्टमिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग इफेक्टिव अगेंस्ट क्लामाइडिया, जैसे कि अजीथ्रोमाइसिन 1 ग्राम एज अ सिंगल डोज एंड डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द कंजक्टाइवा। इसमें एक बात बताऊँ, मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ ना, उसमें आई रीड। सो पता है क्या हुआ कल? जब सर ने बोला कि एक हर बच्चे को बोला कि तुम ये पार्ट रीड करो, तुम वो पार्ट रीड करो, तो मेरा जो रीड करने का स्टाइल था ना, बहुत क्लियर था हर वर्ड्स, और काफ़ी सही पॉज भी कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। ऑल्दो मेरे को रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आई एम अ बिट डिसलेक्सिक, बट मेरा जो रीडिंग था ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग था, क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस किए हुए थे, है ना। पर वही हमें को याद है कि हमको जब टीचर उठाते थे क्लास में, इंग्लिश इंग्लिश का जैसे पीरियड रहता था और मैम उठाती थी और बोलती थी रीडिंग करो, मैं इतना गंदा रीडिंग करते थे कि सब हंसते थे, क्योंकि तो प्रेशर फील होता था। मेरे को ऐसा फील होता था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अंदर ही अंदर, कि छी उसको रीडिंग भी नहीं करने आता है। बट एज ऑफ नाउ आई कैन रीड एनीथिंग विथ कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से। और ये पता है कैसे हुआ? ये बार बार प्रैक्टिस करने से आया। आई नेवर गेव अप, लाइक मुझसे मुझे ना लैंग्वेज सीखने में या रीडिंग करने में, इस सब में बहुत प्रॉब्लम होता है, बट आई नेवर गेव अप, एंड सी आई एम बेटर ऑफ देन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल। मुझे ना लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे कोई लैंग्वेज सीखने में या फिर इनफैक्ट कुछ भी लिखने में, कन्वे करने में थोड़ा दिक्कत होता था। बट देन फिर हम रुचि से मिले एंड मेरा इंग्लिश का यू नो एक राइटिंग स्किल होता है ना, राधिका दी से मिल मिल के वो अलग सा इम्प्रूव कर गया था स्टोरी टेलिंग। अब फिर इससे शायद पता नहीं है अब, नहीं वो टाइम, बट एक टाइम पे था मेरे पास। तो एवरीथिंग हैपन्स विद प्रैक्टिस। अगर मैं मेडिकल साइंस का भी प्रैक्टिस करते रहूँगी, पढ़ते रहूँगी, नीट पीछे मेरे हलवा रहेगा। So guys, let's move on. So tuberculosis of the conjunctiva, this is rarely seen nowadays. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस तो पूरे शरीर में फैल जाता है, बट ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द कंजक्टाइवा जो है रेयरली देखा जाता है। इट वॉज सीन टू अकर टिपिकली इन यंग पीपल which were often free of clinical signs of tuberculosis elsewhere in the body, suggestive of a primary infection of exogenous origin. बाप रे। The disease is rare manifestation of tuberculosis and nearly always produces ulceration. Myco Mycobacterium tuberculosis is a non-motile, encapsulated rod-like organism which stains with difficulty but resists decolorization with strong mineral acid and is therefore referred to as acid fast bacillus. Human and bovine variety produces lesion in man. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मल्टीपल स्मॉल मिलियरी पैल्पेबल कंजक्टिवल अल्सर, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, gelatinous exences of the fornix resembling clock's comb, a pedunculated polyp-like growth,
or a tuberculoma like nodule at the limbus may be seen. Apart from tuberculosis, differential diagnosis of the conjunctival ulceration should include presence of either an emerald foreign body or a syphilitic lesion. So course of disease क्या है? So the initial or primary lesion is an acute process, healing in a short time and producing an inconspicuous parenchymal lesion with cessation of the draining lymph node. The post-primary lesion reinfection occurs in an individual who has developed a hypersensitivity to the organism and is associated with severe parenchymal involvement with a minor effect on the regional lymph node. The disease is chronic and the ulcer are indolent, but there is little pain or irritation unless the ulceration is extensive. So investigation के conjunctival scraping may show acid fast tubercle bacilli and histopathological section of a biopsy of the lesion shows typical Langerhans giant cell systems. ट्रीटमेंट क्या है एटीटी होगा शायद इफ द डिजीज इज अ प्राइमरी फोकस इट शुड बी प्रेफरेबली बी इरेडिकेटेड बाय excision of the affected conjunctiva. If it is not feasible, it should thoroughly be scraped and cauterized by diathermy. In all cases, systemic ATT is administered in conjunctiva in conjunction with the physician. In conjunction with the physician. Now we have syphilis. So in syphilis we have rarely this manifests itself in the conjunctiva in the form of primary chancre, which is less indurated than the ordinary genital chancre and is usually acquired by the contact with an infected oral lesion. A chronic ulcer or gummatous ulceration of the palpebral or more commonly of the bulbar conjunctiva is suggestive of the condition, particularly when the regional lymph nodes are enlarged. So investigation क्या है? Scraping should be taken and examined for spirochetes. Trypanoma may be demonstrated by dark ground microscopy examination. Differential diagnosis के primary chancre of the palpebral conjunctiva may be wrongly diagnosed and treated as salazion. So what is the management? Tetracycline, topical tetracycline, systemic penicillin. डोज उसका स्टेज ऑफ सिफिलिस के हिसाब से देखना है. सिफिलिस में बेसिकली पेनिसिलिन दिया जाता है. पेनिसिलिन इज प्रेफर्ड इन syphilis. Then we have tularemia. So etiology and mode of spread. So tularemia is a widespread distribution in America, Europe and Asia and is caused by organism. And is caused by organisms जैसे Fanciella tularensis derived from animals such as deer, cattle, sheep, beavers,
cards, squirrels, and rabbits. तो इन्फेक्शन कैसे फैलता है? डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से विथ एनी ऑफ दीज स्पीसीज और वाया एन इंसेक्ट वेक्टर। टिक्स एंड डियर फ्लाइज से।